Okay, beta. Okay. Last time, beta, we just started with the LDR, thermistor, diode, capacitor. ठीक है? Let's just quickly go through what is an LDR. LDR is a light dependent resistor. One mark for K, you should know the symbol of an LDR. Now, the resistance of an LDR is always inversely proportional to its light intensity. लाइट इंटेंसिटी जितनी हाई होगी मींस जितनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी एलडीआर की रेजिस्टेंस जो है उतनी लो होगी vice versa. Let's say if there is darkness in the room, that means that the light intensity is very low, and if the light intensity is very low, तो उसकी जो resistance होगी LDR की that is high then. Okay, so then we just talked about the circuit as well. कि अगर आपके पास हमने पहले भी डिस्कस किया था कि if the resistors if they are connected in series, okay, तो अगर तो आपके पास रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो सीरीज के अंदर द करंट ऑफ द सर्किट स्टेज द सेम. The total resistance of the circuit is the sum of the individual resistances, and the voltage is divided in a series circuit. ठीक है? We've already discussed about the parallel circuit as well. कि जो आपके पास parallel circuit होता है, parallel circuit में voltage stays the same, current जो है current is divided, and जो total resistance calculate करने का formula होता था that is 1 over RT equals to 1 over R1 plus 1 over R2. अगर आपके पास कोई भी let's say if there is a circuit or a question that's given to you, ठीक है? So what we do, आपके पास ये सर्किट दिया हुआ था, तीनों की रेजिस्टेंस हमें पता है. जो दो उनसे those two resistors which are in parallel to each other, you calculate their combined total resistance using this formula. Then you add that the resistance of 20 ohms which is in series with that. So you get the total resistance of the whole circuit. अगर आपने total current circuit का find करना है, for that you need the total resistance and you need the total voltage of the entire circuit as well. Okay? मुझे लग रहा है there are certain students who just want कि मैं I think I'll share a Google Meet link as well with them. अगर किसी को इसमें Teams में connectivity का issue है so they can just join us over there. या चलो इट्स फाइन ऐसे रहने दो. हाँ ठीक है. तो ये हमने करंट कैलकुलेट कर लिया. अगर अब आपने वोल्टेजेस फाइंड करनी होगी तो वोल्टेज का फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर. ठीक है. तो करंट को आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यू गेट द वोल्टेज. ठीक है. अच्छा अब लेट्स से इफ यू आर प्रोवाइडेड विद दिस टेबल, so we have an LDR and a fixed resistor in series. जैसे ही ब्राइटनेस होगी बेटा तो एलडीआर की अपनी रेजिस्टेंस जो है वो लो हो जाती है. तो दैट मीन्स कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल आल्सो डिक्रीज. और करंट और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है इफ द वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट. सो दैट मीन्स कि द करंट इन द सर्किट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. नाउ द वोल्टेजेस, मैंने एक बात लिखी थी कि इन अ सीरीज सर्किट जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस लो होती है उसके अक्रॉस आपके पास जो वोल्टेज है वो भी उतना लो होगा. ओके. और जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हाई होती है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उतना हाई है. तो लेट्स से इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर डिक्रीजेस तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है that will decrease, and which means that the voltage across the other resistor will automatically increase. Okay. Acha. Then next we just talked about the thermistor.
Thermistor क्या होता है? Thermistor is a temperature dependent resistor, or the resistance of a thermistor is inversely proportional to its temperature. जितना टेम्परेचर हाई होगा थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस उतनी लो होगी, और अगर थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस लो होती है and it's connected in series with a fixed resistor, so the total resistance of the circuit will decrease, and since current and resistance is inversely proportional, तो current जो है that will automatically increase. One last thing, I'll repeat again. In a series circuit, the voltage across that resistor is less, जिसकी resistance small होगी. The smaller the resistance, the smaller the voltage across that resistor. The larger the resistance, the larger the voltage across that resistor in a series circuit. Okay, the next up we just talked about the potential divider circuit as well. So potential divider means a voltage divider circuit जिसमें आपके पास voltage divide होता है. Series circuit के अंदर voltage is always divided. अच्छा, then we just talked about what is Ohm's law. Voltage is directly proportional to the current provided the temperature and the resistance is kept constant. Now please remember कि बेटा जो नॉन ओमिक सब्सटेंसेस हैं उनमें वोल्टेज एंड करंट they are not directly proportional to each other because they do not obey the Ohm's law. Okay, so the non-ohmic substances, they do not obey the Ohm's law. Voltage and current is not directly proportional to each other because neither the resistance nor the temperature stays constant. और इसकी एग्जाम्पल है एक फिलामेंट लैम्प. ठीक है, सो अगर आप एक लैम्प को ऑन रखते हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो यू विल ऑब्जर्व द लैम्प बिकम्स हॉट. सो इट मींस कि उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प विल आल्सो increase. So if you have to sketch a voltage against the current graph for a filament lamp, so it looks like this. On the other hand, if we have to sketch a current against the voltage graph, तो उसकी शेप ये है. तो एग्जाम में आपसे ये दोनों चीजें वो आपसे पूछ सकता है. ओके, और वोल्टेज और करंट का ग्राफ का जो ग्रेडियंट था दैट गिव्स अस द रेजिस्टेंस. द ग्रेडियंट ऑफ अ करंट अगेंस्ट द वोल्टेज ग्राफ गिव्स अस द resistance. Then next we talked about the diode. Diode का function होता है it converts an alternating current into a direct current. Alternating current क्या होता है? जिसमें current का जो magnitude और direction है it is constantly changing, but in a direct current the magnitude and the direction of the current it stays constant. If the positive junction of a diode is connected to the positive terminal, so it will let the current to pass through. However, if the positive junction of the diode is connected to the negative terminal of the battery, it will stop the flow of current. Acha, then we talked about the capacitor. Capacitor का ये symbol है and it is used to store the charge. Okay, last we just ended on the formulas of the electrical power and the electrical energy. Electrical power के अगर आपको formulas बेटा याद है, P is equals to IV, P is equals to I square R, P is equals to V square over R. Okay, so I stands for the current, V stands for the voltage and R is the resistance. पावर के ये जो तीनों फॉर्मूलाज है, इफ यू मल्टीप्लाई देम विद टाइम t, सो यू गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अच्छा, नाउ प्लीज रिमेंबर कि आपके पास जो फर्स्ट वाले फॉर्मूलाज हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी यूज देम स्पेसिफिकली फॉर अ पावर सप्लाई, अ बैटरी, अ सेल और एनी इलेक्ट्रिकल सोर्स जो आपके पास पावर सप्लाई कर रहा होगा. सो वी यूज P is equals to IV
or we can use E is equals to IVT. Acha. Now, when do we use the other formula? P is equals to I square R or P. Dekho, you can use the P is equals to IV to calculate the electrical power across an LDR resistor, thermistor, diode, or a heater. But we prefer if we use the formulas P equals to I square R or P equals to V square R. But you can use the third formula as well. So we'll do a question for that. Okay, we have a clear understanding of everything now. Okay, so let me just draw a circuit. So let's say we have a power supply and we have this resistor and we have these two resistors. Okay, now this is a, let's say, 24-volt battery and ये आपके पास 12 ohms है. This is 8 ohms and this is 4 ohms. Now we have to, so let's say if I sketch an ammeter, ammeter is always connected in series. Now I'm going to draw two voltmeters as well, V1 and V2. And I'm going to draw, this is I1 and this is I2. And let's say this is I. So let's say we just have to calculate, first part mein, we need to calculate the total resistance of the circuit. Then we have to calculate, acha, beta, if you have any questions, so aap mujhe please, you can ask those questions on the WhatsApp to me and I'll directly answer you the questions in the class. Okay? Or just text me. Okay, so the second part is we need to find out the total current in the circuit. We also need to find out the voltage V1, V2, and we also have to find out I1 and I2. Okay, after we have calculated this, then we have to calculate the electrical power. So now we have to calculate the electrical other parts. Yes, बेटा you have to round off the two जो answer होता है उसको हम two significant figures में round off करते हैं. That is only for the final answer. But let's say अगर आप कोई पिछले part की value use कर रहे होगे तो वो आपने three significant figure ही use करनी है. So electrical power of battery, and let's say we have to calculate the electrical power across the 12 ohm resistor, 8 ohm resistor, and the 4 ohm resistor. Okay, so this is the question. First of all, we have to calculate the total resistance of the circuit. So the total resistance के लिए सबसे पहले we have to figure out कि कौन से दो resistors parallel में है और कौन से resistor series में है. So 8 ohms and the 4 ohm resistors, ये दोनों आपस में parallel है. So let's just calculate the combined resistance of these two resistors. So 1 over RT equals to 1 over 8 plus 1 over 4. तो आप इसको directly you can put that on the calculator और ये आपको दे देगा 2 plus 1, that is 3 over 8. Now you have to take the reciprocal of your answer. So that gives us 8 over 3 ohms. Acha, so that is the combined resistance. Let me call it RC. So this is the combined resistance of the parallel resistor. Total resistance hogi 12 plus 8 by 3. So let's say we get how much? 36 plus 8 is going to be 44 over 3 ohms. So the total resistance of the circuit is 44 by 3. अब आपने अगर let's say beta you have to give the answer. So you're on you get the value 14.67 ohms. So but final answer should be to two significant figure. So you can write the answer as
15 ohms. अब आप अगर let's say if we have to just solve the second part में we have to find out the total current. Current का formula है I is equals to V over R. Total voltage is 24 and the total resistance of the circuit is 44 over 3. Okay, or you will use 14.67, not the rounded off answer. Okay, so let's use 14.67. So 24 divided by 14.67 we get 1.64 एम्पेयर. अब आपने फाइनल आंसर जब देना है तो आप यहां पे लिख सकते हो 1.6 एम्पेयर्स. Next part में he is asking us to find out the voltages V1 and V2. V1 voltage का formula V is equals to IR. Current is 1.64 और आपने V1 is across 12 ohm, so times 12. So 1.64 times 12 we get 19.6 volts. Because अगर आपने V1 is connected across the 12 ohm ना, तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज आपने फाइंड करनी होती है उसमें से कितना करंट और उसकी अपनी रेजिस्टेंस कितनी है, वी यूज दोज वैल्यूज टू कैलकुलेट इट्स वोल्टेज. ओके, अच्छा, नाउ नेक्स्ट अप लेट्स से वी हैव टू कैलकुलेट V2. अब V2 के लिए बेटा क्योंकि 12 ohm is in series with a combined resistance of 8 and 4, तो टोटल वोल्टेज में से 24 में से if I subtract V1, so I'll get the voltage of V2. So 24 minus 19.6, we get 4.36. So that is 4.36 volts. So इसको भी round off करके that is 20 volts. इसको round off करते हैं तो that is 4.4 volts. Okay, so the final answer should be to two significant figures. Now the third part is we have to calculate the currents. So current निकालने के लिए I1. अब देखो बेटा 8 ohms and 4 ohm resistor is in parallel. तो अगर ये दोनों resistors parallel में है तो parallel में voltage stays the same. So if I have to use calculate I1, तो that will be, अब I1 किस ब्रांच से फ्लो कर रहा है, जिस ब्रांच में 8 ohm resistance है. So we'll use the resistance as 8. Current का formula I is equals to V over R. So V2 we just calculated 4.36 divided by 8. 4.36 divided by 8 we get 0.545 amperes. Now similarly if you have to calculate I2, again the voltage across the 4 ohm resistor is also V2. So V2 divided by 4. So V2 is 4.36 divided by 4. So 4.36 divided by 4, we get 1.09 amperes. और इन दोनों currents का जो sum है that should be equal to 1.64 amperes. Now we have to calculate the electrical powers of each electrical component. अब देखो अगर आपने इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करनी है बैटरी की, सो बेटा पावर का फॉर्मूला क्या है, P is equals to IV. I is the current, V is the voltage. So what is the total current that is supplied by the battery? That is 1.64 amperes. And what is the total voltage supplied by the battery? That is 24. So 24 times 1.64, we get 39.36 watt. And you can round it off and you get 39 watt. Okay? अगर आपने बैटरी की पावर कैलकुलेट करनी है तो मैंने आपसे ऊपर यही कहा है कि बेटा we have to use the formula P equals to IV. I is the current and V is the voltage. So current supplied by the battery, which is the total current, that is 1.64
मैं अगेन अगर आप पिछली वैल्यू इफ यू आर यूजिंग दैट वैल्यू अगेन तो बेटा आपने राउंडेड ऑफ वैल्यू यूज नहीं करनी यू हैव टू यूज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू फॉर दैट so 1.64 is the current supplied by the battery and 24 volt is the voltage supplied by the battery and you get the power. Next up, we have to calculate the power across the 12 ohm resistor. देखो, if you want to find out the power across 12 ohm resistor, it's totally your choice. P is equals to IV, I square R, and you can also use P is equals to V square R formula as well. So, beta, let's say if we want to find out the power across 12 ohm resistor, so I can use IV. अगर मैं IV ही यूज कर लेता हूं अब जो 12 ओम रेजिस्टर है इसमें से टोटल करंट ही फ्लो कर रहा है तो 1.64 और जो 12 ओम के क्रॉस वोल्टेज है दैट इज V1 and V1 is how much that is 19.6 so 19.6 times 1.64 we get 32.1 watt. Okay, so that is the sorry power का unit is watt. Okay, so अच्छा मैं इसको let's say you can use the other formula as well that is P is equals to I square R 12 ohm में से the current that is flowing is 1.64 का square and the resistance is how much that is 12. So if you use this formula as well so you'll get the same value which is 32.3. अब आपको आंसर जो है we have to round off the answer to two significant. So if you round off these values, so they both are equal to 32 watt. You can also use the third formula that is P is equals to V square over R. सो मैं एक दफा उससे भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि वी कैन यूज एनी ऑफ दीज फॉर्मूलाज सो द वोल्टेज across the 12 ohm resistor is how much it is V1 which is 19.6 square and divided by the resistance that is 12 to 19.6 square divided by 12 again you get 32.0 watt and if you round off the answer that again gives you 32 watt. So beta, to calculate the electrical power, what is the formula? P is equals to IV, P is equals to I square R, or you can use P is equals to V square over R. Okay? Let me just repeat again. आपके पास एक सर्किट दिया होगा सबसे पहले 3 मार्क्स का आपसे वो ये कहेगा कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 1 मार्क है कि अगर आपने ये लिखा है 1/RC equals to 1/8 plus 1/4. If you have written this, you'll get 1 mark for that. The other mark is कि आपके पास जो भी combined resistance आएगी parallel resistors की, you add the series resistance into it. So you'll get 1 mark for this expression and 1 mark for the final answer. So this is how you'll get 3 marks. Just second part hoga, you'll get the second part which is to calculate the current that is for 2 marks. आपके पास 1 mark है if you either write down the formula or you substitute the correct values in the formula. So please write down the formula first and then 1 mark if you have the correct answer. Now let's say for the third part that is going to be for 2 marks. अच्छा now इसमें अगर let's say it's for 2 marks it means कि आपके पास absolute answer का mark है सिर्फ. We use the formula V equals to IR. I is the current. Okay. V1 जो था
it is across 12 ohm. इसमें से total current flow कर रहा है, which is 1.64. You multiplied it with 12, you get the voltage across it, which is 19.6. So 1 mark absolute for the answer of V1 and V2. Similarly, 1 mark absolute for the currents I1 and I2. देखो I1 जो है और I2, 8 ohm and 4 ohm resistor, 8 ohms and the 4 ohm resistor, they both are in parallel. Parallel में voltage same रहता है. So 8 ohms and the 4 ohm resistor will get the same voltage, that is V2, and that is 4.4 volts. तो अगर आपको पता है कि 8 ohm resistor को कितनी voltage मिल रही है, that is 4.4, so you can calculate the current, which is using the formula I equals to V over R. So once you have the current, next up, let's say if we ask you to calculate the electrical power of the battery, that will be for 2 marks. 2 marks में 1 mark is if you write down the correct formula, or if you substitute the values correctly. Okay? So, and 1 mark is for the final answer. Okay? So this is how you'll score 2 marks for the, to calculate the power of the battery. Now let's say if you have to calculate the power across the 12 ohm resistor, again, that will also be for 2 marks, 1 mark for the formula, and 1 mark if you write down the correct answer. Okay? So this is how. Okay, now let's just quickly calculate the electrical power across the 8 ohm and the 4 ohm resistor. So let's say if we have to calculate the electrical power across, so electrical power across the 8 ohm resistor, again beta, you can use the formula P is equals to IV. But you have to be careful कि करंट कितना है और वोल्टेज कितना है. देखो 8 ohm resistor से I1 current is flowing and the voltage across 8 ohm resistor is V2. So we'll use I1 and V2. अब current कितना है? I1 is 0.545, V2 is 4.36. So if you multiply 0.545 times 4.36, we get 2.38 watt. If you want to use the other formula, which is P is equals to I square R, तो 8 ohm resistor से कितना current flow कर रहा है? That is 0.545. So 0.545 square times the resistance, that is 8 ohms. If you have any question, beta, आप मुझे WhatsApp पे please text कर दो. I'll respond back here. So you get the same power, which is 2.38 watt. Final answer should be two significant figures. Okay. Last May, we had to calculate the power across the 4 ohm resistor. 4 ohm resistor से current I2 flow कर रहा है और इसके cross voltage is also V2. So I2 into V2, I2 की value है 1.09 and the voltage across it is 4.4. I hope you guys are just noting it down as well. So 0.48 watt. Okay? So this is the final answer. Okay, ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रिकल पावर का. अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर के अलावा we need to know the formula for the to calculate the cost of electricity. Okay, so there's a formula for that. Total cost
of electricity. Okay. Now the formula is power in kilowatt, power in kilowatt times time in hours, time in hours times cost of electricity per unit. Cost of electricity per unit. Cost of electricity. बेटा if you have any questions, please मुझे आप WhatsApp पे टाइप करके सेंड कर दो क्वेश्चन अपना, so I'll respond back to you. Okay? So if someone has just raised their hand, so please you can just simply क्या कहते हैं, just text me and I'll respond back to you through the WhatsApp message. Okay? Acha. So this is the formula to calculate the total cost of electricity, power in kilowatt times time in hours, time cost of electricity per unit. So let's just do a question ताकि हमें पता लगे कि एग्जाम में हमसे कैसे पूछेगा. So beta, the question is going to be a heater supplies 0.8 amperes of current and 36 volts for 50 minutes. Okay? For 50 minutes. If, okay, cost of per unit electricity, if the cost of per unit electricity is let's say 5 cents, calculate total cost of electricity. So we have to calculate the total cost of electricity. अच्छा, someone is just asking thin wire की resistance और current ज़्यादा होगा या thick wire की. बेटा wire जितनी thin होती है resistance उतनी high होती है, तो resistance जितनी high होगी तो उतना smaller current will flow through that wire. Okay? अच्छा, so the question is heater supplies 0.8 ampere of current. So we know the current is 0.8 amperes and the voltage is 36 volts for 50 minutes. Time is also given. Time is 50 minutes. If the cost per unit is 5 cents, we have to calculate the total cost. सबसे पहले we have to find out the power in kilowatt. पावर का फॉर्मूला वी जस्ट डिस्कस्ड कि पावर का फॉर्मूला होता है P is equals to IV. Current is 0.8 and the voltage is 36. So 0.8 times 36, we get 28.8 watt. अच्छा, अगर आपने इसको वॉट से किलोवाट में चेंज करना है, so you have to divide it by 1000. अगर आपने पावर को वॉट से किलोवाट में चेंज करना है, तो you will divide the power by 1000. So 28.8 divided by 1000, we get 0.0288 kilowatt. Okay? So we have the power in kilowatt. Acha, time should be in hours. So let's say if the time is in minutes and you have to convert it into hours, so you divide it by 60. So we get 5 by 6 is 0.833 hours.
Okay. So you have the time in hours, you have the power in kilowatts, you also know the cost per unit of the electricity is 5 cents. Now we just have to substitute these values in the formula. So the total cost of electricity is going to be power in kilowatts times time in hours times cost per unit. Okay, so that means कि power in kilowatt is 0.0288, time in hours is 0.833, and cost per unit is 5 cents. So if we multiply these values, so what do we get? We get 0.12 cents. Okay, so बेटा आपको ये एग्जाम में 2 marks का he is going to ask you to calculate the total cost of the electricity. 1 mark is for the absolute answer. This is going to be for 3 marks actually. 1 mark is that you calculated the power using its formula P is equals to IV. So 1 mark for that, 1 mark for the absolute answer, and 1 mark that you just multiply the power in kilowatt with time in hours with cost per unit. Okay? So this is how we calculate the total cost. Current and voltage is given. Power का formula P is equals to IV. So you multiply current and voltage, you calculated the power. Watt से kilowatt में जाना है, so you divide it by 1000, you get the power in kilowatt. How do we calculate the total cost of the electricity? Power in kilowatt times time in hours time cost per unit. Okay. Now, moving on, now let's just talk. So, this is all part of the practical electricity. Okay, electrical power, the this cost of electricity. So, they all are part of the practical electricity. Okay, so this is actually practical electricity. Okay, now let's just talk about a fuse. Okay, so सबसे पहले तो बेटा we should know okay, what is the correct symbol for a fuse. So fuse का जो correct symbol है that is okay. So let's say the correct symbol for a fuse 1 mark का आपसे वो ये भी कह देता है कि you have to draw the so this is the symbol okay. सिंबल का फ्यूज आ जाता है 1 मार्क का. अच्छा इसका फंक्शन पूछता है कि फ्यूज का पर्पस क्या है. सो द पर्पस ऑफ अ फ्यूज इज कि इन केस ऑफ एक्सेस करंट एक्सेस करंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा करंट. सो इन केस ऑफ एक्सेस करंट फ्यूज मेल्ट्स और ब्रेक डाउन. ओके, जो फ्यूज होता है वो मेल्ट हो जाता है, हेंस डिस्कनेक्टिंग live wire from electrical appliance. Electrical appliance. ओके, सो अगर आपसे वो 2 मार्क का ये पूछा है कि फ्यूज का क्या करता है. सो जब आपके पास करंट बहुत ज्यादा हो जाए सर्किट के अंदर, ठीक है, तो इन केस ऑफ एक्सेस करंट जो फ्यूज है इट विल मेल्ट instantly. And what will happen? It will disconnect the live wire from the electrical appliance. We'll talk about okay, what is the live wire and where do we use the live wire basically. Okay, so in case of excess current, the fuse melts, hence disconnecting the live wire from the electrical
अप्लायंस, और इससे ये होता है कि इट प्रिवेंट्स इट प्रिवेंट्स appliance from becoming live, so user does not get an electric shock, does not get an electrical shock. ओके अच्छा, ये लाइव वायर होती क्या है? देखो, लाइव वायर इज बेसिकली द वायर विच इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ग्रिड स्टेशन. और जो लाइव वायर होती है, लाइव वायर इज ऑलवेज एट द हाई वोल्टेज. और जैसे जो हमारे घरों के अंदर जो लाइव वायर है, द लाइव वायर इज बेसिकली कमिंग from the transformers that are connected, or the transformers that are present. Okay. अच्छा, सो फ्यूज क्या करता है कि लाइव लाइव वायर जो होती है, लाइव वायर इज ऑलवेज एट द हाई वोल्टेज. ठीक है. जब वो हाई वोल्टेज आपके पास सर्किट में एंटर हो रहा होता है, एंड व्हेन देयर इज एक्सेस करंट, तो फ्यूज मेल्ट कर देता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है बेसिकली. ओके. अच्छा, सो हाउ इट डज दैट? आई ड्रॉ द हाउस सर्किट. नाउ द हाउस सर्किट looks like this. आपके पास, so this is fuse and this is a live wire. आपके पास जो लाइव वायर होती है बेटा, दैट इज ऑलवेज एट हाई वोल्टेज. ठीक है. इसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है. अब आपके पास आगे, दिस इज एन इलेक्ट्रिक मीटर. So this is an electric meter in our house, and this is a neutral wire. लाइव वायर से करंट जो है वो एंटर होता है इनटू द होम, और न्यूट्रल वायर से जो करंट है, इट लीव्स द होम. ओके. सो दिस इज न्यूट्रल वायर. जो न्यूट्रल वायर होती है बेटा, वो 0 वोल्ट्स पे है. ओके. अच्छा, लेट्स से आपके पास जो नॉर्मली हमारे घरों में भी, अब हमारे घरों में भी जो लाइव वायर ट्रांसफार्मर या ग्रिड से आती है, सो हमारे घरों में 220 वोल्ट्स आते हैं, 220 से 240 वोल्ट्स के अराउंड. सो द लाइव वायर इज एट 220 वोल्ट्स, और लेट्स से द करंट इज हाउ मच? द करंट इज 5 एम्पेयर्स. ओके. अच्छा, सो नॉर्मल जो करंट हमारे घर में आ रहा है, दैट इज 5 एम्पेयर्स. अब बेटा न्यूट्रल वायर जो है, न्यूट्रल वायर इज एट 0 वोल्ट्स, बट इट हैज द सेम करंट एज द लाइव वायर. सो ये प्लीज ये याद रखना है, ये 1 मार्क का इसने ये एग्जाम में पूछा हुआ है. उसने ये बताया हुआ है कि द करंट in the live wire is 5 ampere. State the current in a neutral wire. So neutral wire और live wire में same current होता है. और उसने ये भी पूछा हुआ है कि the voltage in the live wire is 220 volts. State the voltage in a neutral wire. तो neutral wire जो है उसमें 0 volts होता है. ओके. सो न्यूट्रल वायर से हमेशा करंट लीव्स, और जो आपके पास लाइव वायर है, लाइव वायर में हमेशा करंट एंटर्स. ओके. सो द करंट एंटर्स थ्रू द लाइव वायर इनटू द हाउस, एंड इट लीव्स थ्रू न्यूट्रल वायर फ्रॉम द हाउस. अच्छा, अब ये आगे मीटर में आपके पास बेटा डिफरेंट कनेक्शंस आ जाते हैं. सो लेट्स से आपके पास
we have these two lamps. These two lamps, they are connected in series together. Okay? So ये दोनों lamps जो है ये series में connected है. If you're going to turn on the switch, let me call this switch as S1. If S1 is turned on, both lamps work. ठीक है, ये दोनों सीरीज में है. अच्छा, now let's say we have another one. So let me call this lamp as X, Y. So X and Y lamp is in series. Okay, X and Y is in series. And let me call this lamp as Z. Okay, so this Z lamp is basically in parallel. Okay, so ये आपस में parallel है. Okay, now let's say if I have another one, यहाँ पे मैंने एक मोटर लगाई हुई है. This is the symbol of a motor. This is the symbol of a filament lamp. Okay, हमें फिलामेंट लैम्प का सिंबल भी पता होना चाहिए. हमें इलेक्ट्रिक मोटर का सिंबल भी पता होना चाहिए. सो वी कैन सी कि all three of them they are connected in parallel to each other. Okay, so they all three of these are in parallel. अब देखो बेटा, पैरेलल में इन्हें हमने कनेक्ट किया हुआ है. इसका ये मतलब है कि यू कैन सेपरेटली कंट्रोल. If you're going to turn on switch S2, only lamp C will work. If you turn on switch 3, only the motor will operate. And then at the end, once the current just flows through these branches, then it leaves the circuit through the electric meter. Okay? और मीटर जो है वो आपके यूनिट्स वगैरह कैलकुलेट कर रहा होता है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी हैव कंज्यूम्ड सो फार. ओके, इलेक्ट्रिक मीटर ये करता है. एंड देन द पर्सन जो भी आपकी बिलिंग है वो फिर नंबर ऑफ यूनिट्स दैट हैव बीन यूज्ड उसको पर यूनिट उसके साथ मल्टीप्लाई करके so you get the total cost of the electricity that is just consumed. If anyone has any confusion so far, any questions so far, तो बेटा please feel free to discuss. मुझे WhatsApp पे आप मैसेज कर दो अगर कोई बात किसी को क्लियर नहीं है, कुछ नहीं समझ आया तो I'll repeat again. Okay? Is it clear everyone? I hope there's an option for the thumbs up here. उन्होंने ये कहा हुआ है कि reactions वाला तो मैंने ऑन किया हुआ है. If it's clear to all of you, तो बेटा just give me a reaction so ताकि मुझे I have an idea. Okay, चलो good. ठीक है? I hope it's fine. अच्छा, so बेटा we should know कि हमारे पास ये जो house circuit है, how does the house circuit basically looks like? अब आपके पास बहुत सारे घर में फैंस होते हैं. आप एक स्विच ऑन करते हो तो सिर्फ एक फैन होता है ऑन होता है. आप एक स्विच ऑन करते हो तो तीन लाइट्स इकट्ठे ऑन होती हैं. तो वो जो तीन लाइट्स इकट्ठे ऑन होती हैं दे आर इन सीरीज. और जो फैन और जो लाइट्स हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो पैरेलल में व्हेन यू कनेक्ट द सर्किट इन पैरेलल तो उससे क्या होता है कि द ओवरऑल सर्किट the overall resistance of the circuit decreases. और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतने पावर लॉसेस या एनर्जी लॉसेस जो है वो आपके कम होंगे. अच्छा, अब आपसे ये चीज भी एक और क्वेश्चन एग्जाम में वो ये पूछता है अबाउट द फ्यूज रेटिंग. ठीक है, सो व्हाट इज फ्यूज रेटिंग? देखो बेटा, let's say if the normal current that enters into the house is 5 amperes.
So that does not mean that you will use a fuse of 5 amperes or maybe 6 amperes. So आप जो fuse rating है, it is always higher than the normal current in the circuit. Okay? जो fuse rating है, fuse rating, it is higher than normal current in circuit. अच्छा, अब बेटा कितना हाई होना चाहिए? ठीक है, सो एटलीस्ट आप कह लो कि ये 4 to 6 एम्पेयर्स हायर होनी चाहिए फ्यूज रेटिंग। तो हमारे केस में जो ये सर्किट है जिसमें नॉर्मल करंट लेट्स से इज 5 एम्पेयर्स, तो आपके पास जो फ्यूज रेटिंग है वो 4 एम्पेयर हायर कर दो। ठीक है, 9 एम्पेयर्स। ठीक है, 4 amperes higher than normal current। देखो बेटा, अगर आप लेट्स से 9 amperes जो है अगर आप 1 एम्पेयर लेते हो, तो बेटा अगर थोड़ा सा भी करंट आपके पास इंक्रीज होता है तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका फ्यूज मेल्ट होता जाएगा एंड यू हैव टू कीप ऑन रिप्लेसिंग इट अगेन एंड अगेन। अच्छा, व्हाई डज द फ्यूज एक्चुअली मेल्ट एंड हाउ डज इट मेल्ट? जो फ्यूज है, इट्स मेड फ्रॉम अ थिन वायर, और जो थिन वायर होती है इट हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फ्यूज जो है, फ्यूज मेड ऑफ thin wire of low melting point। अच्छा बेटा, वो आपसे ये भी पूछता है, बताओ 1 मार्क का, कि व्हाई डू वी कनेक्ट द फ्यूज इन द लाइव वायर? तो बेटा लाइव वायर में हम इसलिए कनेक्ट करते हैं बिकॉज द लाइव वायर इज एट हाई वोल्टेज। ओके, फ्यूज में और अदरवाइज अगर आप लेट्स से if you connect the live wire in neutral wire, okay, let me just write down that। ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये सारी एग्जाम में उसने आपसे पूछी हुई है। द फ्यूज इज कनेक्टेड इन live wire as live wire is at high voltage। दूसरी बात, if fuse connected to neutral wire, so appliance becomes live या stays live। okay, in case of excess current, in case of excess current। अच्छा, अप्लायंस लाइव हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि देखो आपके पास जितनी घर में भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होती हैं, वेदर इट्स अ वॉशिंग मशीन, वेदर इट इज समथिंग एल्स, सो दे दे आर मेड फ्रॉम, दे हैव मेटल केसिंग्स एज वेल। तो जब उसमें एक्सेस करंट आता है, so that current starts flowing through the metal casing of the electrical appliance, or when the current starts flowing through the metal casing of the electrical appliance, तो वो जो appliance itself है वो अब high voltage है। तो let's say बेटा, if you're going to touch that appliance, so you will get an electric shock। तो what is an electric shock? Electric shock ये है कि जब आप उस appliance को touch करते हो, so the current will start flowing from the appliance through your body into the ground। So आप basically
करंट को एक पाथ प्रोवाइड कर देते हो टू फ्लो थ्रू योर बॉडी इनटू द ग्राउंड। ओके जी, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Just a little thumbs up so that I can know if it's clear to all of you. जी जी बेटा, क्लियर है सबको? ओके हाँ जी। सो बेटा ये भी 1 मार्क का उसने पूछा हुआ है, मतलब ये वाला 2 मार्क का पूछा हुआ है। 2 मार्क किस किस बात के थे कि आपने एक सेस करंट के बारे में बताया हो और आपने ये बताया हो कि जो अप्लायंस है इट बिकम्स लाइव। और इसने ये चीज का 1 मार्क का ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, फ्यूज रेटिंग का भी 1 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे वो एग्जाम में पूछ देते हैं। अच्छा, नाउ आई होप कि we'll just quickly talk about the live wire, the neutral wire and the earth wire. Okay? Okay. So let's say बेटा जो आपके पास लाइव वायर है, लाइव वायर इज एट हाई वोल्टेज। ठीक है, इट इज एट हाई वोल्टेज और इसका कलर हमें बस पता होना चाहिए कि द कलर ऑफ अ लाइव वायर इज ब्राउन। ओके, कलर इज ब्राउन। ओके, नाउ व्हाट इज अ न्यूट्रल वायर? न्यूट्रल वायर जो है इट इज एट लो वोल्टेज। ठीक है, और इट इज एट 0 volts। बट प्लीज करंट लाइव और न्यूट्रल वायर में इक्वल होता है एंड द कलर कोडिंग ऑफ द न्यूट्रल वायर इज ब्लू। ओके, नाउ द थर्ड वायर इज एन अर्थ वायर। अर्थ वायर किससे कनेक्टेड होती है? अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केसिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। इट इज connected to metal casing of an electrical appliance। अच्छा, अब उसने एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि हाउ डज एन अर्थ वायर प्रिवेंट्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो इसमें क्या होता है कि इन केस ऑफ एक्सेस करंट द करंट flows through the earth wire into the ground। Okay, in case of excess current flows through earth wire into ground। Okay, so what happens in case of the excess current? जो current है it will flow through the earth wire into the ground। Now the color of the earth wire is green and yellow। So what is the color of the earth wire? It's green and yellow। Okay, so beta we just need to remember this। So we have already talked about the house circuit, live wire, neutral wire, earth wire के बारे में। ठीक है, let's just take a quick, जल्दी से हम देख लेते हैं कि what we have discussed so far। The symbol of the fuse is this। फ्यूज जो है इन केस ऑफ एक्सेस करंट फ्यूज मेल्ट हो जाता है और उससे ये है कि इट प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम बिकमिंग लाइव so that the user does not get an electric shock। Fuse जो है it's made from a thin metal wire which has a low melting point। तो excess current के केस में that thin metal wire in melts। अच्छा, or we also talked about कि why do we connect the fuse and the live wire? Because the live wire is at high voltage। Okay, ताकि
Yeah. So live wire is at high voltage and it has the maximum current. Neutral wire has 0 volts, but it has the same current as the live wire. Earth wire जो है, it's connected to the metal casing of an electronic appliance and it provides a path to the excess current to flow from the metal body of the appliance into the earth or into the ground. Okay, we also talked about the total cost of electricity, in which the power should be in kilowatt times the time is in hours, and the cost of electricity per unit. Okay, so this is, yeah. अच्छा बेटा, hazards of electricity में हमारे पास क्या क्या आ सकता है? We'll talk about the hazards of electricity. इस पे मतलब कम आते हैं सवाल, but let's just talk about that. Hazards of electricity. So the first one is insulation of the cable is damaged. Insulation, आपके पास जो वायर्स होती हैं या जो केबल्स होती हैं उनके अराउंड हमने रबर की जो है इंसुलेशन की होती है. सो इंसुलेशन मतलब रबर इंसुलेशन क्या होती है? इफ इट मेल्ट्स, इंसुलेशन और रबर ऑफ वायर मेल्ट्स. ठीक है, तो अगर इंसुलेशन मेल्ट हो जाती है तो आपके पास जो मेटल वायर है वो एक्सपोज हो जाएगी to the user, and if someone accidentally touches it, so they might get an electric shock. तो इसकी रेमेडी हमारे पास क्या होती है कि we use double insulation. Use double. So this is the first one. Use double insulation. मतलब दो दो कवरिंग होती है ना. So ये आपके पास ये केबल है और ये केबल के ऊपर रबर की कवरिंग है. आप इसको डबल कर देते हो बेटा. ओके, ये केबल है और इसके ऊपर डबल इंसुलेशन की हुई है. ओके, सेकेंडली डैम्प कंडीशंस. डैम्प का मतलब होता है वेट कंडीशंस. ठीक है, इफ यू टच इट विद वेट हैंड्स तो करंट जो है इट विल फ्लो थ्रू योर बॉडी इनटू द ग्राउंड. ठीक है, बिकॉज जो ये वाटर है इट प्रोवाइड्स अ पाथ टू द flow of current. Okay, so damp conditions, safety precautions may overheating of cables as well. So the third one is overheating of cables. जब आपके पास बहुत ज्यादा करंट फ्लो करे सर्किट से तो उससे क्या होगा कि केबल्स में क्या कहते हैं हीटिंग इफेक्ट होता है. And because of the heating effect that is just produced in the cables, तो उससे क्या होगा कि आपकी अगेन जो वायर या केबल है वो मेल्ट हो सकती है. So we use double insulation, we use earthing of the metal casing of the wires, we have to select a normal fuse rating, you have to make sure that the electrical contacts are good. Okay, so these are the रेमेडीज फॉर दैट. और इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट. मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर्स भी होते हैं ना, तो यू आर बेसिकली कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द heat energy. You can also produce the lighting effect, so we can convert the electrical energy into light energy. जो normal bulbs, filament lamps जो हमारे घरों में lights लगी हुई हैं, so they are basically electrical energy is converted into the light energy. Okay, motor का effect भी मतलब you can produce a turning effect or a rotational effect. Okay, I hope it's clear to everyone. That marks the end of this whole electricity thing. ठीक है, अच्छा, we'll quickly go through some past paper questions as well, तो ताकि हमें ये हर चीज क्लियर हो जाए.
So here are the worksheets. Okay, let me open any of these. Oh, okay, so that was just a test. So हम लोग quickly we'll try to go through some of the MCQs. ताकि we have the cells, lamps, and the resistors in the circuits are identical. In which circuit is the lamp the brightest? Okay, so ये आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है और आपसे ये पूछ रहा है कि किस सर्किट में जो लैम्प की ब्राइटनेस है वो सबसे ज्यादा हाई होगी. ओके, अब देखो बेटा, अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, जैसे पार्ट बी में these two resistors are connected in series or lamp is also is in series with those two resistors. तो बेटा इसमें आपके पास वोल्टेज ज्यादा डिवाइड होगा. तो अगर ज्यादा वोल्टेज डिवाइड होगा सो लैम्प विल गेट लेस वोल्टेज. ओके, नाउ इफ वी लुक एट द पार्ट सी, these two resistors they are connected in parallel. पैरेलल में ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है. तो अगर इन दोनों रेजिस्टर्स की अपनी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है तो the parallel combination of these two resistors is in series with the filament lamp. तो उससे क्या होगा, इनकी रेजिस्टेंस कम है तो इस इनके क्रॉस वोल्टेज भी कम होगा. सो द लैम्प विल गेट more voltage, so that means the answer is C. Okay, ये जो दो रेजिस्टर्स हैं दे आर इन पैरेलल. पैरेलल में उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस डिक्रीज और उससे ये होगा कि the voltage across these two parallel resistors will be less, and if they get less voltage so the lamp will get more voltage automatically, so the lamp will be the brightest. Which component when used in a circuit allows the current to pass only in one direction? So that is a diode. So the symbol for a diode is this. This is the symbol for a filament lamp. ये fuse का symbol है और the last one है that is for an light dependent resistor. अच्छा, I have not explained about the LDR as well. नहीं, LDR तो sorry मैंने बता दी है. ये सिंबल उसका था. खैर, okay, the graph is the voltage current graph for two resistors wires P and Q. The wires are made from the same material and have equal lengths. The resistance of the wires and their cross sectional areas are different. So wires have the same material and they have equal length. The wire has which wire has the greater resistance and which wire has the larger cross sectional area? अब बेटा जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसकी रेजिस्टेंस उतनी लो है. सो सबसे पहले तो वी हैव अ वोल्टेज करंट ग्राफ. सो जो P है, P has a greater slope और P has a greater gradient than Q. That means कि the line P has higher resistance. तो अगर P की higher resistance है, that means कि P has less cross-sectional area. So the answer will be B. So P has higher resistance and Q has greater cross-sectional area. Okay. Question number 4. Which diagram shows the arrangement of the ammeter and voltmeter to obtain readings to find the power of a lamp? So we have to find the power of the lamp. Ammeter should be in series and the voltmeter should be in parallel across the lamp. So, जी sure. मुझे पूछना है कि आप यहाँ पे कब तक हैं, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ मुझे लंच करने के लिए. 10 minutes. 10 मिनट्स के हैं तो आप मुझे ये लॉक करके मुझे चाबी दे देंगे रूम में. No issues. 2 में जा रही हूँ. Sure. मिस राबिया, मिस बुशरा. Okay. Downstairs है नीचे. Downstairs बिल्कुल Okay. नीचे ही ज़्यादा इंटरेस्ट. Okay. So चाबी आपके पास. Sure. Thank you. अच्छा. So ammeter should be in series and the filament lamp
and the voltmeter should be in parallel. So B is the correct answer. Because आपने अगर लैम्प की पावर निकालनी है तो आपको लैम्प की वोल्टेज चाहिए, and for that you will connect the voltmeter across the filament lamp, and the ammeter should be in series. Okay. Next up, a charge of 45 coulomb flows through an electrical appliance in 3 minutes. What is the average current? करंट का जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था, I is equals to Q by T, charge is 45 and the time is in minutes. You have to convert the time into seconds. So 3 into 60, we get 160. 3 into 60, we get 180 seconds. So 45 over 180, you'll get 0.25 amperes. If you guys say I can do the working for this as well, I'll do the working for that. It's fine. So the formula for the current is I equals to Q by T. Charge is 45 and the time was 3 minutes, 3 into 60. So that gives us 0.25 ampere current. Okay. Acha, next में a potential divider is connected across the terminals of a 6-volt supply. We have a 6 ohm resistor and this is the symbol for a fixed resistor. When R is adjusted to 6 ohm, the voltmeter readings V1 and V2 are equal. What happens to the readings when the resistance of R is increased? देखो, अगर आप इसकी resistance increase करोगे, so these two are in series. In series, that resistor gets more voltage, the one with the higher resistance. जिसकी resistance higher, it will get more voltage. तो अगर R की resistance increase हो रही है, तो it will get more voltage. और 6 ohm की so R gets more voltage, so V2 will increase and V1 will automatically decrease. Okay. Question number 7. The diagram shows a circuit. Which diagram shows the circuit? So you can see कि आपके पास दो cell है. Positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell. So the answer can be either A or it can be D. Because इसमें B और C में एक ही cell लगाया हुआ है जबकि दो cell लगे हैं. दूसरी बात ये कि the lamps are in parallel. So the correct answer should be A. Okay. The diagram shows 3 resistors in parallel. What is their combined resistance? So 1 over RT equals to 1 over 15 plus 1 over 30 plus 1 over 30. So that will give us 4 over 30 and 4 over 30 is 2 over 15 or 15 over 2, that is 7.5 ohms. Okay, so we have to use the formula. Acha. अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है बेटा कि मतलब दैट इज हार्ड एंड यू वांट मी टू सॉल्व इट, प्लीज जस्ट लेट मी नो थ्रू द मैसेज. ओके. In which circuit is the voltmeter reading 7.2 volts? So in which circuit is the voltmeter reading 7.2 volts? Acha. So beta, you have to, you can use the formula because it's a potential divider circuit na. So R2 over R1 plus R2 times the total voltage. तो आप check करोगे for each of these resistors. Let me just tell you okay, how we are supposed to. So let's say okay, so here's the question. अब बेटा let's say अगर मुझे इसकी voltage चाहिए तो 5 divided by इन दोनों की total resistance है 5 plus 3 times the total voltage, that is 12. So it's going to be 5 over 8 into 12. 4 2s are 4 3s are 3 5s are 15 over 2, that is 7.5 volts. अगर इसकी निकालनी है तो 6 divided by 6 plus 4 into total voltage is 12.
6 over 10 into 12. So that is going to be 2 5s are, 2 6 are, 6 6 are 36 over 5, 5 7s are 35, or 1 0 7.2 volts. So the correct answer is B. Okay. Acha. Next up, we have the diagram shows a circuit where must an ammeter be connected to measure the smallest current. देखो बेटा, पहली बात तो ये ए और डी, अगर मैं यहाँ पे एमीटर लगाता हूँ, दैट विल गिव मी द टोटल करंट एंड द टोटल करंट विल बी द हाईएस्ट. अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है ना, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन अ पैरेलल सर्किट करंट फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ. जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से उतना ज्यादा करंट होगा. तो इसमें 10 ओम और 20 में इसकी कम है, तो इसमें से ज्यादा करंट होगा, इसमें सबसे लीस्ट करंट होगा. सो विल कनेक्ट द एमीटर ओवर हियर at C position. Two resistors of resistances 30 and 60 ohms are arranged in parallel. The current in the 80 ohm resistor is this. Okay, so the current in the 30 ohm resistor is this. What is the potential difference across 60 ohm? Dekho, we know the current and the resistance of this. If I use the formula V is equals to IR 0.6 into 30, that gives me 18 volts. अब क्योंकि ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो दोनों को वोल्टेज सेम मिलेगा. सो बोथ ऑफ दीज रेजिस्टर्स विल गेट 18 वोल्ट्स. ठीक है. अच्छा बेटा, आई होप it's clear to all of you. Please just do the past paper practice. Please solve the worksheets that I've already shared with all of you. ठीक है. And if you have any confusion